हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर प्रिय सर फॉर यू। आज का टॉपिक में सी अभी आई अंडरस्टैंड कि चैप्टर वाइज वी विल गेट टू नो क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू वी एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। ओके, सो आई राइट इट ओवर हियर। रियल नंबर्स में रियल नंबर में 1 मार्क का क्वेश्चन वो आ सकता है कि HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है हमेशा फॉर 1 मार्क, या फिर 2 मार्क्स का भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेट कितना क्वेश्चंस है। ओके, सो आई राइट इट एंड गिव इट टू यू। सो ये वाला जो टॉपिक है HCF into LCM that is equal to product of the two numbers. प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, ये एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड 3 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन कंफर्म होता है ये चैप्टर में से, दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज irrational। Prove that root 5 is irrational। तो ये 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो फर्स्ट चैप्टर में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, इन पॉलिनोमियल्स तो यू नो चिल्ड्रन वेरी वेल, आई लेट यू नो 1 मिनट। फिर आता है सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। In polynomials you expect but obvious alpha and beta। पूरा चैप्टर में अल्फा बीटा ही पूछा गया है अभी तक। ओके, सो दे माइट गिव यू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दे माइट आस्क यू टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। सो फर्स्ट आई विल राइट फाइंडिंग द zeros of the polynomial। फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये एक्सपेक्टेड है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेर यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कई बार यह पूछता है कि रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस, वो एक्सपेक्टेड है। देन दे विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उन लोग पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो समथिंग रिलेटेड टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन समथिंग। तो अल्फा एंड बीटा वाला क्वेश्चंस 100% एक्सपेक्टेड है फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, द थर्ड वन तो इट्स वेरी इजी टू memorize because only one thing, I'll write the chapter name also, that is pair of linear equations। pair of linear equations in 2 variables। इसमें तो 1 guaranteed 3 मार्क क्वेश्चन होता है या 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है। they will give you a word problem, करेक्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम में से तुमको 2 कंडीशंस फ्रेम करने होते हैं एंड यू गेट 2 इक्वेशंस फॉर दैट वर्ड प्रॉब्लम। फिर 2 इक्वेशंस का तुम ग्राफ ड्रॉ करके द वेयर डू दे इंटरसेक्ट, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट। तो 1 आई कैन से ग्राफिकल क्वेश्चन तो कंपल्सरी। ओके, एंड सेकेंड इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर पेपर में। देखोगे बोर्ड का एग्जाम का पेपर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो विल बी हैविंग 2 इक्वेशंस गिवन टू यू, 2 इक्वेशन दिए जाएंगे
एंड तुमको बोलेंगे दिस टू इक्वेशंस हैज व्हाट आई कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइंस और द लाइंस आर पैरेलल, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के टाइप. ओके, डोंट हैव अ कंफ्यूजन बिकॉज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इट ऑल्सो कम्स इन 4th चैप्टर, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, सो मैं वापस रिपीट करता हूँ. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, one graphical question and second they will be giving 2 equations and they will also say these 2 equations have infinite solutions, coincident lines or parallel lines or unique solution, etc. things. They ask you to find the value of m, k, any other variable or alphabet in the question. Okay, next 4th chapter, that is quadratic equation. Now children, quadratic में they might give you 2 marks question. Solve the quadratic equation by factorization method. Now factorization means splitting up the middle term. Okay, so one question might be expected on factorization. Factorization possible है. And second one, completing square method, which is not there for this board exam. Okay, इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, but that method is also very important. And the third one, but obvious, we have formula method. So we have factorization method, we have formula method. ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछेंगे एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स और ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड और सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंपल्सरी. एंड देन अगर इफ यू गो फॉर 5 मार्क्स तो इसके ऊपर बड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा फॉर 5 मार्क्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है पेपर में. ओके, सो थर्ड वन सी, दैट इज एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट. क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला जो टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट वाला, दैट ऑल्सो कम्स फॉर 2 मार्क्स एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट ऑल द बोर्ड पेपर्स टिल नाउ. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा एंड उन्होंने बोलेंगे दैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. फिर तुम इमीडिएट सोचने का कि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू विल बी 0 एंड वो इक्वेट करके दे आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. So again I am telling you, this is compulsory expected in the board exam. This is also important. Word problem पूछेंगे ही पूछेंगे for 5 marks. Kids, 5 marks का question है word problems, बहुत easy होता है. Okay, so these all marks should be in your pocket at the earliest. Okay, then moving out to the next chapter. After quadratic, if I am not wrong, we have arithmetic progression. Yes, we do have arithmetic progression. I'll write the chapter name also and the importance as well. So from chapter number 5, we have arithmetic progression. Now, in arithmetic progression, basically, I'll divide this one. मैं divide करके देता हूँ. First, they will ask you about an. एक simple सा AP देंगे, and they will ask you to find the 14th term of this arithmetic progression. और अगर 3 marks का करना है, तो उन लोग और थोड़ा बढ़ाएंगे क्वेश्चन को. फॉर एग्जाम्पल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया होगा एंड दे विल गिव यू सम कंडीशंस दैट 5th टर्म ऑफ दिस AP is 12 more than
the third term of this AP and consecutive, so on, so on, so on. So conditions देंगे and they will ask you to find out the sequence as well as the first term as well as the common difference, and ये सब होने के बाद एक 1 mark का क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, find the 75th term of this sequence. So if you are lucky enough, you will be getting 3 marks वाला क्वेश्चन और 5 marks वाला क्वेश्चन from AP. So questions on AN, and second is you all know very well, that is SN. SN रहेगा तो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम, मतलब एक सेंटेंस दिया होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ. फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन यू कैन से 0 to 100, और ऐसा वाला क्वेश्चंस आएंगे. सो फाइंड द सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स which are divisible by 7. So find the sum of all 3-digit numbers divisible by 7. ऐसा भी क्वेश्चन आता है for 3 marks. Okay, and one more thing, need to discuss this with you. C point, the third point, and that is the case study. Case study question बहुत सारा पेपर्स में मैंने देखा है. इनफैक्ट तुमने भी देखा होगा कि केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है दैट कम्स फ्रॉम एपी चैप्टर. इफ़ यू इमेजिन और इफ यू थिंक वो बैंक वाला क्वेश्चन, ईएमआई वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ईएमआईज टू बी पेड, फाइंड द टोटल अमाउंट व्हाट ही हैज़ टू पे, दैट इज एसएन, ये वाला सब क्वेश्चंस इट कम्स फ्रॉम एपी फॉर केस स्टडी फॉर 4 marks. तो बेटा एपी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज एपी चैप्टर बहुत इजी है एंड इट इज स्कोरिंग. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज एक्चुअली द डेडलीस्ट चैप्टर ऑफ ऑल ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज ट्रायंगल्स. बिकॉज बेटा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है दैट इज फाइन, नॉट अप टू दैट लेवल, छोटा सा लेवल है. Okay, so chapter number 6, and that is my favorite, that is triangles. Okay, triangles, no doubt we have BPT, that is basic proportionality theorem. इसके ऊपर भी questions आएंगे. Find the value of x करके बोलता है when you have a triangle and then the line will be given parallel to this line. And so these values are given. Somewhere you will be having x, and they find the value of x. This will come for I think 1 mark MCQ question में आ सकता है for triangles. Okay, and then since you will be very lucky कि triangles में बहुत सारा portion delete कर दिया है CBSE ने for this current 10th standard का exam. Now I don't know how they are going to be for the next consecutive year. If it is the same, then again this coming batch will be lucky enough. Okay, so BPT important है, and then the tests for similarity of triangles. Okay, वो एक question है, देखो, I'll tell you, this was the A part where you have to use the basic proportionality theorem, and second one you have this type of question also very common, that is shadow reckoning property. I tell you, बता रहा हूँ exactly क्या है ये. So shadow reckoning property, वो वाला क्वेश्चन देखो, गारंटी आता है ये 3 marks का आता है बेटा. 3 marks. सन रेज है, बॉय स्टैंडिंग हियर, तो उसका शैडो का लेंथ उतना. एट द सेम टाइम मेरे पीछे एक बड़ा पोल है, उसका शैडो कितना है लेंथ का ग्राउंड पे, वो वाला क्वेश्चन जहाँ पे तुमको याद रखना है, तुमको ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर करके लिखना है डायरेक्टली बाय शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी. उनको अलग से सिमिलर प्रूव नहीं करना है बेटा. ओके, प्रूफ बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी. तो ये वाला क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है. एंड देन द थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल, दैट इज डिफरेंट टेस्ट्स टू प्रूव द 2 ट्रायंगल्स सिमिलर. वो वाला भी, उसके ऊपर तो 3 marks का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन अगेन वन मोर एक
स्कोरिंग चैप्टर आ गया तुमको, चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क का आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है finding the distance between the two points whose coordinates are given. Okay, so using distance formula, this is good one, this is also expected in the exam. Okay, next moving ahead, then you have एक 3 marks का क्वेश्चन आ सकता है, that prove that 4 points देंगे with the coordinates, common sense, and they might ask you to prove that these 4 vertices are the vertices of a rhombus or parallelogram or rectangle or square, ये पूछ सकता है। एंड अगर स्क्वायर को प्रूव करना है, मतलब प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, देन तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो जाएगा। बिकॉज इफ यू नो वेरी वेल, स्क्वायर में तुमको 4 साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन यू ऑल्सो नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ दैट स्क्वायर, ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, and if the sides are equal, diagonals are equal, then you will call it as a square. तो coordinate geometry में distance formula 100% आएगा, मतलब आएगा। And next is the section formula. Now section formula, इसके ऊपर भी देखो 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ तुमको, फाइंड द रेशियो बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइंड द रेशियो इन विच 1 पॉइंट डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ A and B. That type of question surely expected in the paper for 2 marks or 3 marks as well. Okay, so they'll give you 1 point which divides the joining of A and B, and they will ask you to find in what ratio is the line divided. वो question भी आता है coordinate geometry में. Okay children, so distance formula important, section formula, this type of question be expected in the paper for 3 marks. So this is all about coordinate geometry. Next chapter, I can say बहुत डर लगता है नाम सुन के, एंड काफ़ी सारा बच्चे लोग के मेंटालिटी हो गया है कि अरे ये चैप्टर तो बाबा मुझे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर को मैं क्लब करके बना देता हूँ पॉइंट्स। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9 which goes for trigonometry. Okay, for trigonometry मुझे पता है बेटा, अगर 1 type of question है, if sin theta is given 13/5, find the ratio or find all the other trigonometrical ratios. ये भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे तुम एक ट्रायंगल लेके, राइट एंगल ट्रायंगल लेके पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड द थर्ड साइड एंड देन यू फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. ये एक्सपेक्टेड है. ओके, सेकेंड इज द वंस विद द आइडेंटिटीज. Ones with the identities. 3 identities: sin square plus cos square is equal to 1. 1 plus tan square is equal to sec square. 1 plus cot square is equal to cosec square theta. ये 3 आइडेंटिटीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है. एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, 3 मार्क्स का गारंटीड एक क्वेश्चन पेपर में रहेगा. प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस जहाँ पे बच्चे लोग को डर लगता है. बट आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली किड्स, पहला
ये जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, पहले टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का फिनिश करो, एकदम थरो थरो, मतलब नींद से भी उठाएगा ना रात को 3 बजे, प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट करके तुम मन में बोल के सॉल्व करके फिनिश करना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन चाहिए। तो पहला एनसीईआरटी फिनिश करो, एनसीईआरटी होने के बाद देन गो टू ओनली वन बुक, एक बुक पूरा हिस्ट्री है उसमें, दैट इज R.D. शर्मा, उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करो बेटा, मोर देन इनफ, एंड देन यू टच एनी बोर्ड पेपर ऑफ एनी ईयर, उसमें सब पेपर में प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस मिलेंगे 102%, बट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, ओके। तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस 3 marks guarantee, and one of this type where you have something is given, they will ask you to find all the other trigonometrical ratios. फिर अगर ये बेस है, ये बेस क्लियर हुआ तो 9th चैप्टर तो बहुत आसान है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें तो मैं आई डोंट थिंक आई शुड राइट, बिकॉज एक ही क्वेश्चन आता है फॉर 3 marks और 5 marks। 3 marks का आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दे मस्ट बी गिवन, they will be given, and you will be asked to find the height of a say example cable tower or building, whatever, electric pole, kuch bhi ho, they will ask you to find the height of that thing। But 5 marks का है तो they will ask you those type of questions where the angle of elevation changes from one place to other place, and the person has taken so much of time to go from here till there, find out the speed of that person who is walking, running, whatever। ये 5 marks का questions है। So again I'm telling you, trigonometry and applications of trigo, पहला textual questions finish करो, okay। So you expect this time identities मतलब prove that वाला question, and one big word problem that is from the next chapter, applications of trigo। So ये word problem important है। In word problem also I'll give you the type। some of the questions might ask you to find the height, and some of the questions they might ask you to find the speed of any person or any object। That this is what comes from trigonometry chapter 8 and chapter 9। This is how it works, okay। Now moving ahead to chapter number 10, this also I can say easiest of all, that is circles। chapter number 10, in circles अगर तुमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे तो हार्डली कुछ 13-14 क्वेश्चंस हो गए, एक ही एक्सरसाइज है सर्कल्स वाला। सो सर्कल्स में आई टेल द कंसेप्ट्स, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखता हूँ 9 कंसेप्ट्स। 9 कंसेप्ट्स मतलब ग्रेड 9 के जो कंसेप्ट्स है, पहला वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखो, ब्रशअप करो अच्छे से, दिमाग में रखो ग्रेड 9 के कंसेप्ट्स, because it is useful for grade 10 का questions। For example, I'll give you an example, a circle is given, okay, and they will draw this, they will draw what not they want to draw, this and this, and they will ask you to find out this angle, फिर यहाँ पे center है, then they will ask you to join this, join this, join this, you want to find out this। तो ये जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, यहाँ पे ग्रेड 9 का कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज होगा, बता रहा हूँ बेटा, ओके। एंड देन सर्टेन क्वेश्चंस लाइक यू गेट ए, सर्टेन क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू टू फाइंड द पेरीमीटर एज वेल। ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखा है बोर्ड पेपर में, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, नॉट सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल, जब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे ना बेटा तो यू माइट हैव अ ट्रायंगल अपस्टेयर्स यहाँ पर, तो उसका पेरीमीटर क्यों, बिकॉज वो वाला कंसेप्ट जो है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर वेरी इक्वल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये प्रॉपर्टी पे बहुत सारा क्वेश्चंस डिपेंडेंट है सर्कल्स में, ओके। सो कमिंग बैक टू सर्कल्स, आई एम टेलिंग यू पहला ग्रेड 9 का कंसेप्ट ब्रशअप करो। इफ 9 का कंसेप्ट का सर्कल से कुछ डाउट है, प्लीज कम बैक टू मी, please come back to me, please write it, write for me,
हाँ, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उस पर चैट करो, मेरे से बात करो. ओके, कुछ भी डाउट्स है, ये ग्रेड 9 का कंसेप्ट, कम बैक. I'll again make a video immediately and I'll shoot. Okay, so this is what we have from circles. I hope my kids are understanding. Now I should say thank you or I should say sorry, I don't know, but construction chapter जो scoring था उसको CBSE ने delete कर दिया. Okay, next 12th chapter, that is area related to circles. Areas related to circles. अभी इसमें तो list है. Okay, first is direct question, 1 mark MCQ, that find the area of a sector. Okay, so they might give you find area of sector. Okay, second, they might give you the area of the sector and they might ask you to find the theta. This also plays a vital role. Find the theta. Okay, third one, I'll give you the list of questions what are expected from this chapter. Third one, ये तो क्वेश्चन जो बताने वाला वो बहुत जगह में they have asked. Minute hand. So find the area swept by the minute hand for next 15 minutes, for next 30 minutes, next 60 minutes or 45 minutes, whatever. Okay, but ये क्वेश्चन बेटा पूछता है find the area swept by the minute hand. Okay, area swept by the minute hand of a clock. Okay, this question is expected. And then sorry, and then next is find the area of shaded region. Find the area of the shaded region where you have to, they might be giving you a sector and they might give you a segment. एक chord देगा तो उससे segment बनेगा, correct है, and they will ask you to find the area of the shaded region. For example, don't worry, I'll teach you. For example, you have a circle, okay, center, okay, you have a sector which is ready over here and one chord. So this is your segment which is shaded. So they will ask you to find the area of this portion which is shaded. So but obvious it is the segment. So how do you find area of the complete sector minus area of this triangle? If you remove, you get area of the shaded region. तो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कंपल्सरी. 1 2 3 4. ओके, लिस्ट बना के फटाफट चालू करो प्रिपरेशंस. ओके, आई मीन टू से प्रिपेयर तो हो तुम लोग कि रिविजन भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 12th chapter. Now, coming back to one more beautiful chapter of mathematics, and that is the 13th chapter, that is mensuration. Now, mensuration is compulsory, your surface area and volume. Now, in this chapter, kind of questions where you have MCQ possible, 2 marks possible, 3 marks possible, 5 marks possible, case study also possible. Such type of questions, every type of question is possible from this chapter, surface area and volume. First, direct formula. Find the curved surface area of a cylinder whose radius and height is this much. Done. Second, curved surface area will be given, and from that some relation between radius and height, and they will ask you to find the total surface area of a cylinder. So but naturally you have to find out the radius as well as the height. Once those things are ready, then you can find the total surface area of the cylinder. Third type, cone. For cone, but obvious, purposefully they will give you the radius and the perpendicular height, and they will ask you to find the curved surface area of the cone, जहाँ पे तुमको slant height ढूंढना पड़ेगा पहला.
तो वो स्लांट हाइट के लिए पहला पाइथागोरस अप्लाई करो, फिर स्लांट हाइट आएगा, स्लांट हाइट आएगा, फिर कर्व सरफेस एरिया होने दो या टोटल सरफेस एरिया होने दो. इट्स ऑल योर चॉइस हाउ यू सॉल्व इट. देन कम्स टू स्पीयर. स्पीयर में आई हैव सीन मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, बड़ा स्पीयर ले लिया मेटालिक, उसको मेल्ट किया, फिर जो मेल्ट किया जो लिक्विड आया उसी लिक्विड में से नंबर ऑफ स्पीयर्स बनाया मैंने जिनका रेडियस तुमको दिया रहेगा. एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट कि वो कितने सारे छोटा छोटा स्पीयर्स बनाया. वो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली. देन वन मोर, सिलेंडर था उसको मेल्ट करके मैंने कोन बनाया, तो बट ऑब्वियस दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड द हाइट और रेडियस और डायमीटर ऑफ एनी ऑफ द फिगर्स. Guaranteed. Okay, and for 5 marks if it is coming, then that type of question. For example, cylindrical pipe hai, water is flowing at some good speed, or the rate of the water flowing that is given, and that water is being filled into a cubical or a cuboidal tank, whatever the tank is. They will ask you to find out by how much the water will rise in that cuboidal tank or cylindrical tank, whatever the tank, whatever the figure is given. Okay, this comes for 5 marks. Next is the 14th one, and I think that is the statistics. So 14th chapter is stats. Very easy. Very easy. In statistics, first thing to I'll tell, they might ask you to find out the mean directly by any of the two methods, that is direct method or assume mean method. Children, देखो बहुत सारा जगहों में, बहुत सारा वेबसाइट्स में या यहाँ पे वहाँ पे तुमको मिलेगा कि कोई तुमको बोलेगा अरे हमारे स्कूल में तो स्टेप डेविएशन पढ़ाया, फिर तुम बोलेंगे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया. तो वो रखना ही नहीं है दिमाग में. वो क्या बोलते हैं, डाउट. ओके, तीनों मेथड पढ़ाई कर लो, क्या डिफिकल्ट है, बहुत इजी है. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. Okay, if you're lucky, then they will give you the type also in the question, that find the mean by direct method, or find the mean by step deviation method, or find the mean by assumed mean method. Okay, as per to my knowledge, you prepare everything and keep it ready. Mostly तो वही न्यूज़ है कि step deviation has been deleted, so that's okay, but still you have two methods with you to solve. Then find the mode and find the median. मीडियन का केस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, वेर यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y. 100% श्योर है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y, वेयर द मीडियन इज गिवन. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मीडियन and in the formula etc, and then find the missing frequency x and y. This is all about statistics, mean, median, mode. Okay, this is all about your statistics chapter. ogive curve वगैरह तुमको delete है for this current year. Again I am telling, ogive draw करना होता है, curve and all that is not there for you for this current 10th. So mean, median, mode, बस ये तीन ही चीज़ों में घूमता रहेगा stats chapter. Okay, and the last one, that is बोल सकता है कि बहुत स्कोरिंग है, because is the easiest of entire career, I mean to say probability. Okay, for probability chapter तो confirm है, a pair of die is thrown, so you have to remember that sample space would be 36, correct. वो सैम्पल स्पेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सी व्हेन इट कम्स टू वन कॉइन, सो इट्स ओनली हेड एंड टेल. इफ इट्स वन डाइज then it's like 1 2 3 4 5 6. But when you have 2 coins or 3 coins tossed simultaneously, then the possible outcomes and I mean to say the sample space, वो तुमको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. When 3 coins are tossed, when 2 die are thrown, इसका अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, that is cards, playing cards. A deck of 52 cards is well shuffled. Find the probability
that a card chosen at random is a red color card, black color card, a king, a queen, a face card, a number card, 7 of diamond, 6 of hearts, 4 of spades. ऐसा क्वेश्चंस उन लोग कार्ड्स के ऊपर गारंटी दे विल आस्क, कंपल्सरी. ओके, नाउ द लास्ट, दैट इज द केस स्टडी क्वेश्चंस. आई टेल यू, मीन्स इसमें से एक्सपेक्टेड है केस स्टडी आना ये चैप्टर्स में से. फर्स्ट, रियल नंबर्स, you never expect a case study question from it. Polynomials, you do expect a case study question. Pair of linear equations in two variables, I don't think so case study आएगा. Quadratic, it might come in the form of a word problem. Arithmetic progression तो 2-3 stars डालो उसके ऊपर for case study. Okay, then triangles also you expect, हाँ possible है. Similarity यूज करके, CSST यूज करके they might ask you to find sum of the sides. ट्रिगो तो आता ही आता है केस स्टडी. when you say application of ट्रिगो वाला चैप्टर कंपलसरी. सर्कल्स का चांसेस कम है केस स्टडी. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स अगेन 2-3 स्टार्स. इसमें से पूछता है केस स्टडी क्वेश्चन. एंड देन योर बिग बॉस, surface area and volume, and then comes your stats also we have. Stats also case study में आता है. अगर तुम ये बुक रेफर करोगे आर.डी. शर्मा एंड देन सो मेनी अदर रेफरेंस बुक्स, उसमें केस स्टडी आया हुआ है. इवन अपना जो वेबसाइट पे CBSE साइट पे जो सैम्पल पेपर्स आए हैं उसमें भी बहुत सारा पेपर्स में केस स्टडी क्वेश्चंस में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है. एंड प्रोबेबिलिटी तो उसके लिए बना हुआ है केस स्टडी के लिए. कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस दे विल आस्क. ओके, तो एक बार अच्छे से वापस एक बार पूरा वीडियो गो थ्रू करो. किधर भी कौन सा भी चैप्टर में डाउट है, कुछ भी है, राइट टू मी, आ जाओ मेरे पास. ओके, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर किड्स. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव स्पोकन फॉर दीज मेनी मिनट्स. ओके, so please, if any doubts, again I'm telling you, come back to me. Okay, have a good day. Thank you so much.